सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम एंड आज जो है मैं कुछ नए 25 टोटल वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड मैक्सिम्स हैं जो कि मैं गो थ्रू करने जा रहा था और मैंने सोचा कि आपको भी साथ में ले चलूं। आप भी इसे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। मैं इसको सीखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा फील्ड ही यही है। सारे लीगल टर्म्स हैं तो मुझे तो याद करना ही है और आप चाहें तो आप भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 हैं और इसको कुछ लीगल मैक्सिम्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है अवेर इट टेनर मीन्स टू हैव एंड टू होल्ड। अवेर इट टेनर टू हैव एंड टू होल्ड। ठीक है, अवेर इट टेनर टू हैव एंड टू होल्ड। वर्ड Number second, a capite ad calcum. A capite ad calcum. From top to bottom. From top to bottom. From top to bottom. A capite ad calum. From top to bottom. ठीक है, फर्स्ट था average tenor to have and to hold. सेकंड है a capite ad calcum. From top to bottom. Word meaning. Word number 3 है a coilo. Usk a coilo usk ad centrum. A coilo usk ad centrum. A coilo usk ad centrum means from the heavens to the center of the earth. From the heavens to the center of the earth. From the heavens to the center of the earth. A coilo usk ad centrum. A coilo usk ad centrum from the heavens to the center of the earth. वर्ड नंबर 4 है a contrario sensu. A contrario sensu in the opposite sense. A contrario sensu in the opposite sense. A contrario sensu in the opposite sense or in the different way. You can also say that in the different way. So a contrario sensu in the opposite sense. फिर से रिवाइज करेंगे। एवर एट टेनर टू हैव एंड टू होल्ड। सेकंड, अ कैपिटे एट कैलकम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। थर्ड, अ कॉलियो यूज्ड एट सेंट्रम फ्रॉम द हेवंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अ कॉन्ट्रारियो सेंसो इन द अपोजिट सेंस। फिफ्थ, अ फैक्टो एट जस्ट नॉन डेटर कॉन्सेक्वेंसिया। अ फैक्टो एट जस्ट नॉन डेटर कॉन्सेक्वेंसिया। अ फैक्टो एट जस्ट नॉन डेटर कॉन्सेक्वेंसिया means the interference from the fact to the law is not allowed. The inference somewhere इसकी मीनिंग होती है कि उसको किसी डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करना है ना। So the inference from the fact to the law is not allowed. A facto ad jus non datur consequentia. The inference from the fact to the law is not allowed. A facto ad jus non datur consequentia. The interference from the fact to the law is not allowed. 5 वर्ड्स हो गए हैं। 5 वर्ड्स को फिर से रिपीट करेंगे हम। Word number first, ever at tenor to have and to hold. Second, a capite at calcum from top to bottom. 3, a colio used ad centrum means from the heavens to the center of the earth. 4, a contrario sensu in the opposite sense. Fifth, a facto ad just non datur consequentia means the inference from the fact to the law is not allowed. Word number 6, 5 words यहाँ पे हो गए हैं। Word number 6 जो है वो है a mensa at thoro means from table to bed. बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम टेबल टू बेड और ये अ काइंड ऑफ फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि पार्शियल डाइवोर्स बिकॉज ऑफ एडल्ट्री और क्रूएलिटी। सो एक तो कंप्लीट डाइवोर्स होता है, ठीक है, और एक पार्शियल डाइवोर्स होता है, मींस सेपरेशन ऑफ बोथ पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ। एंड जहां पर ग्राउंड ये हो एडल्ट्री और क्रूएलिटी, सो वहां पर ये हम टर्म यूज कर सकते हैं फ्रॉम टेबल टू बेड। और ये जो टर्म है इसका जो लैटिन वर्ड इसके लिए जो है उसको हम कहते हैं मेंसा एट थोरो।
ठीक है. A mensa at thoro means from table to bed. From table to bed. From table to bed मतलब होता है partial divorce because of adultery or cruelty. ठीक है. A mensa at thoro from table to bed. A mensa at thoro from table to bed. Next है 7. A pirate is at Latronibus capta dominium non mutant. A pirate is at Latronibus capta dominium non mutant. A pirate is at Latronibus capta dominium non mutant means things taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership. Things taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership. A pirate is at Latronibus capta dominium non mutant. Things taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership. A pirate is at Latronibus capta dominium non mutant means things taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership. Word number 7 है a prendre. A prendre means a right to take something out of the soil of another is a profit called a prendre. A right to take something out of the soil of another is a profit called a prendre. Next है word number 9. A spoliatus debet ante omnia restitui. A spoliatus debet ante omnia restitui means a person who is wrongfully deprived of his property is entitled to the restitution of his property before all others. restitution यहाँ पर मतलब होता है कि मतलब उसको रिटर्न करना, वापस करना. ठीक है. सो वर्ड नंबर 9 है हमारा spoliatus debet ante omnia restitui means a person who is wrongfully deprived of his property is entitled to the restitution of his property before all other. Word number 10 है a verbis legis non est recedendum. A verbis legis non est recedendum. A verbis legis non est recedendum means you may not vary the words of a statute. मतलब जो कि किसी एक्ट में वर्ड्स मेंशन है उसको आप चेंज मत कीजिए, वो सही नहीं है. ठीक है. सो 9 कहता है spoliatus debet ante omnia restitui means a person who is wrongfully deprived of his property is entitled to the restitution of his property before all other. और word number 10 जो है a verbis legis non est recedendum जिसका मतलब होता है you must not vary the word of a statute. A verbis legis non est recedendum means you may not vary the word of a statute. Word number 11 a vinculo matrimony. A vinculo matrimony means divorce which affects a complete dissolution of marriage contract. Means जब मैरिज होता है और जुडिशियल सेपरेशन होता ही है बीच में और साथ में कंप्लीट डाइवोर्स जो होता है जिसके बाद कुछ लेना देना नहीं होता है, उसको बोलते हैं vinculo matrimony means divorce which affects a complete dissolution of marriage contract. Word number 12 ab assuetis. Ab assuetis means if a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. If a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. Abandon means यहाँ पे त्याग देना. ठीक है. ab assuetis if a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. फिर से रिपीट करते हैं 6 से mensa et thoro means from table to bed. 7 a pirate is at
Latronibus capta dominium non-mutant means things taken or captured by pirates or robbers do not change their ownership. 8. Appendre means a right to take something out of soil of another is a profit called appendre. 9. A spoliatus debet ante omnia restitui means a person who is wrongfully deprived of his property is entitled to the restitution of his property before all others. 10. A verbis legis non est recidendum means you must not vary the word of a statute. 11. A vinculo matrimony means divorce which effects a complete dissolution of a marriage contract. 12. Ab assiotis. Ab assiotis means if a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. Ab assiotis. Word number 13. Ab initio. Ab initio means from the beginning. Ab initio means from the beginning. आपने वर्ड सुना होगा void ab initio means वो स्टार्टिंग से ही उसका कोई अस्तित्व नहीं था. ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं. सो यहाँ पर उसी का जो लास्ट वाला फ्रेज है ab initio means from the beginning. सो किसी भी वर्ड के लास्ट में एब इनिशियो लगता है मींस ये बात करता है कि स्टार्टिंग से ही. ठीक है, एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग. वर्ड नंबर 14. अबेंडन टू विड्रॉ अवरसेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टोटली. ठीक है, टू विड्रॉ अवरसेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टोटली. अबेंडन. अबेंडनमेंट मींस गिविंग अप ऑफ ए थिंग. गिविंग अप ऑफ ए थिंग. गिविंग अप ऑफ ए थिंग. 16. अबेटमेंट. अबेटमेंट ये यहाँ पे ए आया हुआ है, वो दूसरा वाला नहीं है जिसमें हम अबेटमेंट मतलब चेंज वाला जिसमें चेंजेस आते हैं, वो नहीं. अबेटमेंट इसका मतलब होता है रिमूवल और डिस्ट्रक्शन. रिमूवल और डिस्ट्रक्शन. अबेटमेंट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन. 17. एब्डिकेट मीन्स रिफ्यूज एनीथिंग. refuse, abdicate, refuse anything. Abdicate means refuse anything. Word number 18. Abhorrence. Abhorrence. Abhorrence means to conduct, means conduct or behavior. Abhorrence means conduct or behavior of a person or basically a person. Okay, the behavior of the conduct of a person, the behavior of a person is called abhorrence. Abolish means to annul or to destroy. Abolish means to annul or to destroy. Abolish means to annul or to destroy. Next word है abortive means fruitless, unsuccessful. Fruitless, unsuccessful. Fruitless, unsuccessful. So 10 के बाद फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. A vinculo matrimony means divorce which effects a complete dissolution of marriage contract. 12. Ab assiotis means if a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. 13. Ab initio means from the starting, from the beginning. 14. Abandon means to withdraw ourselves from an object totally. 15. Abandonment means giving up of a thing. 16. Abatement means removal or destruction. 17. Abdicate means refuse anything. 18. Abhorrence means conduct or behavior. 19. Abolish to annul or destroy. 20. Abortive means fruitful, fruitless, unsuccessful. Fruitless, either fruitless, you can use the word either fruitless or unsuccessful. 21. Absoluta sententia expositor non indigent absoluta sententia expositor non indigent absoluta sententia expositor non indigent means plain words require no explanation. Absoluta sententia expositor non indigent means plain words require no explanation. Absoluta sententia expositor non indigent means plain words require no explanation. Word number 21.
absoluta sententia expositor non indigit. Absoluta sententia expositor non indigit means plain words require no explanation. Plain words require no explanation. Word number 21. Absoluta sententia expositor non indigit means plain word require no explanation. Word number 22. Assure nemo debet means no one is bound to accuse himself. Se nisi coram de except before God. Accusare nemo debet. Accusare nemo debet means no one is bound to accuse himself. Se nisi coram de except before God. Accusare nemo debet means no one is bound to accuse himself. Se nisi coram de except before God. Word number 23 or maxim number 23. Accusator post reasonable tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusa verit. Accusator post reasonable accusator post reasonable tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusa verit means an accuser ought not to be heard after the expiration of a reasonable time unless he can account satisfactorily for his delay. Accusator post reasonable tempus accusator post reasonable tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusa verit. Accusator post reasonable accusator post reasonable tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusa verit means an accuser ought not to be heard after the expiration of a reasonable time unless he can account satisfactorily for his delay. Word number 24. Acquire means to become the owner of property. Acquire means to become the property of property. 25. Actionable wrong is a illegal or unauthorized act infringing a legal right of another, affording him a ground of actionable for action in law. Actionable wrong means is an illegal or unauthorized act infringing a legal right of another, affording him a ground for action in law. Actionable wrong means is an illegal or unauthorized act infringing a legal right of another, affording him a ground for action in law. ठीक है, तो इसके लास्ट के 5 को पहले रिवाइज कर लेते हैं यहां से 21 से. Absoluta sententia expositor non indigit means plain words require no explanation. 22. Accusare nemo debet means no one is bound to accuse himself. Se nisi coram de except before God. 23. Accusator post reasonable tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusa verit. Excusa verit means an accuser ought not to be heard after the expiration of a reasonable time unless he can account satisfactorily for his delay. Word number 24. Acquire means to become the owner of property. Word number 25. Actionable wrong means is an illegal or unauthorized act infringing a legal right of another, affording him a ground for action in law.
ठीक है, अब इसको फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, ओवरऑल है ना, फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ड नंबर फर्स्ट है एवर एट टेनर मीन्स टू हैव एंड टू होल्ड, अ कैपिटे एट कैलकम मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अ कोलियो यूस्क एट सेंट्रम, अ कोलियो यूस्क एट सेंट्रम मीन्स फ्रॉम द हेवन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अ contrario sensu means in the opposite sense, a facto at just non-dater consequentia means the interference from the from inference from the fact to the law is not allowed, a mensa at thoro means from table to bed, a piratus at Latronibus capta dominium non-mutant means thing taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership, a penre means a right to take something out of the soil of another is a profit called a penre, a spoliatus debet ante omnia restitui means a person who is wrongfully deprived of his property is entitled to the restitution of his property before all other. Word number 10, a verbis legis non est recidendum means you must not vary the words of a statute. Word number 11, a vinculo matrimony means divorce which effect a complete dissolution of the marriage contract. Word number 12, ab assuetis ab assuetis ab assuetis means if a person neglects to insist on his rights, he is deemed to have abandoned it. 13, ab initio means from the beginning, abandon means to withdraw ourselves from an object totally, abandonment means giving up of a thing, abatement means removal or destruction, abdicate means refuse anything, abhorrence means conduct or behavior, abolish means to annul or destroy, abortive means fruitless, unsuccessful. नेक्स्ट है एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया expositor non indigent means plain words require no explanation. Next, accusare nemo debet means no one is bound to accuse himself se nisi quorum de except before God. Next है accusator post reasonabile tempus, accusator post reasonabile tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusaverit, accusator post reasonabile tempus non est audiendus nisi se bene de omission excusaverit means an accuser ought not to be heard after the expiration of a reasonable time unless he can account satisfactorily for his delay. नेक्स्ट है acquire means to become the owner of property, और 25 जो कि लास्ट वर्ड है actionable wrong is an illegal or unauthorized act infringing a legal right of another affording him a ground for action in law. so ये थे आज के 25 वर्ड्स, आप चाहे तो इसको रिपीट करके सुन भी सकते हैं, बट अदरवाइज इतना सफिशिएंट होगा, आपको ये माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें फिट हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, और आपको याद ना भी हो तो समवेयर अगर आप कहीं देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे उस चीज से, ठीक है। तो अगर इनमें से कुछ वर्ड्स आपको याद है तो भी ठीक है, अगर सारे क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक बार में याद करना, बट कुछ याद है तो वेल एंड गुड, और धीरे धीरे हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि रिवाइज करना है। आप चाहे तो इसको नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और रोज हो सके तो 5 मिनट देके इसको रिवाइज कर दीजिए, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, है ना। और मैं भी वही करने वाला हूँ। अभी भी मैं फर्स्ट टाइम बैठा था तो अभी मैंने इसको इन 25 वर्ड्स को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया है, इसका ओवरऑल आइडिया मुझे मिल गया है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी मुझे याद हो गए हैं। अब करना क्या है कि इसको जैसे आज मैं इसको फिर रात को 5 मिनट रिवाइज करूंगा, तो उससे क्या होगा कि एक बार फिर माइंड में ये कैप्चर हो जाएगा मेरे, और फिर क्या होगा कि हर 3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद जब भी संडे वगैरह होगा तो फिर इन वर्ड्स को अगर मैं देख लूंगा, गो थ्रू कर लूंगा, तो फिर ये क्या होगा कि परमानेंटली जो है इन वर्ड्स जो है मेरे माइंड में स्टक हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं नॉर्मल वर्ड्स यूज करता हूँ इन माई डेली बेसिस, डेली लाइफ, तो वहां पर इन वर्ड्स को जब मैं यूज करूंगा तो हो सकता है कि होगा नहीं, ये रिप्लेस कर देंगे मेरे नॉर्मल सिंपल वर्ड्स को इन थोड़े क्लासी वर्ड्स में, है ना।
सो इसको आप भी रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।